Hello everyone, this video lecture for class 7th subject science and chapter number 9, that is soil. So in previous class we have already studied about what are the natural resources and what are the man-made resources, isn't it? So under the natural resources we have learned that water, air, sunlight, and along with soil is also the one of the most important natural resource. It supports that what soil is the it supports the growth of the plants by holding the roots firmly, isn't it, and supplying water and nutrients. So soil is essential for the agriculture. Agriculture provides us food, clothing, shelter for all, है ना. और soil is thus an inseparable part of our life. The earth fragments of soil after the first rain is also refreshing, है ना. So we can say soil is the essential for we people for our life. Indirectly it is essential for our life because whatever we are getting from the plants, that is our main source, मेन फंडा ऑफ द फॉर लाइफ, है ना. हमारी बॉडी के लिए जो मेन चीज़ें हमें मिल रही है वो हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से. एंड प्लांट्स को सपोर्ट करने का काम, प्लांट की रूट्स को फैमिली होल्ड करने का काम कौन कर रहा है? दैट इज़ ओनली सॉइल, है ना. और सॉइल से ही सारे उसको मिनरल्स भी मिल रहे हैं प्लांट्स को, और अल्टीमेटली वो प्लांट्स हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं बिकॉज we all are food like vegetable, fruits, whatever we are eating, maximum things we are getting from plants, isn't it? So ultimately we can say soil is the inseparable part of our life, right? So today in this lesson we will deal with soil. What are the soil and what are the soil profile? Under the soil profile we will learn about the different layers of the soil, and then we will discuss about what is humus, what is weathering, and finally we will conclude. Finally we will ending this today's video lecture with soil profile by learning the soil profile. So first we will start. Let us start first time point. What is soil? So we can say soil is a mixture of many things, है ना. जनरली आपसे पूछा जाएगा सॉइल क्या है तो आप ज़मीन पे देखोगे मैम ये जो मिट्टी है वही तो सॉइल है ना. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट ओनली. सिर्फ जो हमें टॉप लेयर पे जो अर्थ वाले जो लैंड वाले एरिया पे मिट्टी मिल रही है दैट इज़ नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ सॉइल. इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ सॉइल. इट्स नॉट वी कैन से इट्स अ सॉइल, है ना. सॉइल क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, like particles of the rocks, different microorganisms and organism plus humus. Later on we will study about what is the humus and what are the organisms, and nutrients are also found in the soil. So we can say soil is a mixture of many things. Soil is a mixture of many particles, isn't it, including humus and nutrients. Next, soil pollution. So we all know, है ना, कितने टाइप के हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, कितने टाइप का पोल्यूशंस देख रहे हैं. लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, है ना. तो सॉइल पोल्यूशन भी वी आर डूइंग विच वी शुड नॉट डू, बट दो वी आर डूइंग, लाइक पॉलीथीन बैग्स, एनी रैपर्स. कोई भी आप चॉकलेट्स के आपने खाया, थ्रो किया और वो वहीं सॉइल में बड़ी होके सॉइल को पोल्यूट कर रहा है ना. सॉइल में जो वेस्ट थ्रो कर रहे हैं, chemicals should be treated, pesticides pollute soil. So these all things which we are doing to pollute the soil that we should not do, but though we are doing, है ना. कितने सारे टाइप के प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग, ये सब जो भी चीज़ें सॉइल में बड़ी हो रही हैं, what will create it all will be the reason of soil pollution. Or once if the soil will be pollution, what will happen? Obvious, they all affect to our plantation, or they all affect to our agriculture, isn't it? Next topic, that is layer of the soil. So to understand this topic we have to composed of distinct layers. So first of all we have to take a little soil, break the crumb. soil को लेना है, उसको break करना है, and it should be turned into a powder. Right, now take a glass of tumbler. As you see here, that is a glass is given.
3/4 फिल्ड विथ वाटर, उसको 3/4 एरिया तक उसमें वाटर फिल करना है। एंड देन एड अ हैंडफुल ऑफ सॉयल इन इट, उसमें फिर थोड़ा मुट्ठी भरी सॉयल उसके अंदर पॉर करना है। जो आपने क्रम्ब को ब्रेक करके पाउडर में कन्वर्ट किया, उस सॉयल को आपको वाटर में पॉर करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्टिर इट वेल विथ स्टिक टू डिज़ोल्व द सॉइल। सॉइल को डिज़ोल्व करना है, जब तक सॉइल डिज़ोल्व ना हो तब तक उस वाटर को हमें स्टिर करना है। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, उसको कुछ टाइम के लिए without disturbing we have to keep that glass as it is, isn't it? So what we have done to see the layer of the soil, first of all we break the soil, है ना, break the crump with the hand to powder it, and then we have to fill the water 3/4 water in a glass. After filling the water, we are dropping that soil, a handful of soil in that water, and we have to stir that soil for a few minutes, and till that soil should be dissolved. Till that soil should be dissolved, we have to stir it. And what we have to do after it, we have to let it stand undisturbed for some time, isn't it? Now what we will observe, हम थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसको देखेंगे, जैसे ही वाटर साइलेंट हो जाएगा, मूव करना स्टॉप कर देगा, तो यू विल ऑब्जर्व देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल, है ना, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर में डिफरेंट लेयर्स दिखेंगे हमें, दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाउन साइड, जो सबसे नीचे जाके सॉइल के पार्टिकल्स बॉटम में जाके सेटल हो गए, सच टाइप ऑफ पार्टिकल इज द part of a soil that is called gravel. And after gravel, the second number, the particles which are seen, that are the particles of sand, isn't it? Sand will be somewhat lighter than gravel. And clay is again a part of a soil, again is a one type of soil. clay will be settled above the sand, है ना, क्ले दिख रहा है ना, सैंड के ऊपर सेटल हो रही है। एंड आफ्टर दैट what will be seen, that is the layer of the water, and on the top that is humus. Now here is the question, what is humus? So we can say, जैसे आपने मिट्टी को उठाया ना हाथ में, जैसे सॉइल को लिया, उसको क्रम किया, तो उसको क्रम को ब्रेक करने के बाद जो लाइटर थिंग्स है ना, डेड डिकेइंग मैटर्स हैं, लाइक एनिमल ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। जस्ट नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट ना द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, वेयर वी हैव टॉक्ड लाइक विच सम टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर मिक्सड इन सॉइल, है ना, सॉइल फॉर्मेशन में हमने जो चीज़ डीड की, तो उसमें क्या था, रोटिंग डेड मैटर, दैट मीन डेड डिकेइंग मैटर्स लाइक ऑर्गेनिजम्स, और इंक्लूडिंग विथ लीव्स ऑल्सो, लीव्स प्लांट के भी छोटे छोटे लीव्स कभी ड्राई होके मिट्टी में सॉइल में मिक्स हो जाती है ना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमस. सो व्हाट इज ह्यूमस? वी कैन से द rotting dead matter in the soil, that is called humus, right? What is that called? That is called humus here. And one more thing which we will learn from this experiment, that is, you probably know about that there is a soil formed by the breaking down of the rocks. soil हमें कहाँ से मिलती है? it would be we will get by the breaking down of the rocks by the action of wind, water and climate. Here the means of कैसे wind, water, these are the agents, like, right? कैसे हमें soil रॉक में से सॉइल कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे टर्न अप होता है? इट विल बी विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ द विंड, मीन्स तेज़ हवा, आंधी तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, तो रॉक्स का थोड़ा थोड़ा करके टूटना होता है, राइट? देन वाटर प्रेशर, जितना रेन फोर्स ज़्यादा आएगा, जितना वाटर का फोर्स उस सॉइल के रॉक्स के ऊपर ज़्यादा आएगा, उतना ही रॉक्स ब्रेक होती जाएगी, दैट विल बी मेल्ट, है ना, धीरे धीरे ब्रेक होते हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन दैट स्मॉल पार्टिकल्स अगेन इट विल टर्न इनटू और भी छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. एंड दिस इज द अगेन वी कैन से क्लाइमेटिक
फोर्सेस लाइक रेन, विंड, वाटर, स्टॉर्म, ये सारे एजेंट्स के थ्रू rocks will turn into soil, right? So this process of formation of soil, that is called weathering. What is that called? That is called weathering. Or we can say, what is weathering?